Dear students, in this topic we shall discuss the regulation of pH by the kidneys. The pH of blood is maintained within a narrow alkaline range of 7.35 to 7.45. Outside this range, pH becomes incompatible with life because it denatures enzymes and proteins. Kidneys maintain pH by two ways. Number one, by reabsorbing bicarbonate ions and by removing the fixed acids and hydrogen ions. First, we shall discuss in detail the mechanism of reabsorption of bicarbonate ions in the kidneys. Bicarbonate ions actually make a buffer system with carbon dioxide that minimizes changes in pH. Kidneys help to adjust pH by reabsorbing all of the bicarbonate ions in the glomerular filtrate. किडनी की ट्यूब्यूल्स में या रीनल ट्यूब्यूल में जितने भी फिल्टर होकर बाइकार्बोनेट आयंस आते हैं, किडनी उन तमाम को रीअब्सॉर्ब करता है. Out of this reabsorption, 85 to 90% of bicarbonate reabsorption occurs in the proximal convoluted tubule, while the rest are reabsorbed by ascending limb of loop of Henle, distal tubule, and the collecting ducts. Reabsorption is facilitated by secreting hydrogen ions in the lumen of proximal convoluted tubule. ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं, इनको सिक्रीट किया जाता है कि ये जाएं और बाइकार्बोनेट आयंस को कैप्चर करें. इस तरह से कि ये हाइड्रोजन आयंस कंबाइन विद द फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट आयन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड लिपिड सॉल्युबल होती है, इट डिफ्यूजेस इनटू द ट्यूबुलर सेल्स. Inside these cells, it combines with hydroxyl ions to regenerate bicarbonate. The bicarbonate ions in this way, reabsorbed in this way, cross the basolateral membrane of the tubular cell through a sodium bicarbonate symporter. This involves transfer of 3 bicarbonate ions into the blood for every 1 sodium ion. Dear students, now we shall discuss the mechanism or process of removal of fixed acids and hydrogen ions. Kidneys excrete about 70 to 100 millimole of fixed acids and associated acidic hydrogen ions per day. Fixed acids are acidic anions, that is citrate, acetate, gluconate, and lactate. This excretion helps to maintain the plasma hydrogen ion concentration of only 40 nanomoles per liter. Hydrogen ions are removed as ammonium ions and as bound to some filtered buffers. The ammonium ions are produced from the filtered glutamine. ये जो glutamine है, it is reabsorbed by the cells of the proximal convoluted tubule. In these cells, glutamine is metabolized to ammonium ions and bicarbonate ions. Bicarbonate ions are diffused into the blood, जबकि जो ammonium ions हैं, they are secreted into the tubule and excreted in the urine. चूंकि एक अमोनियम आयन इज इक्वलेंट टू 1 अमोनिया मॉलिक्यूल एंड 1 हाइड्रोजन आयन, सो ये जो अमोनिया की रिमूवल है, इट कंट्रीब्यूट्स टू द रिमूवल ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन आयंस. डियर स्टूडेंट्स, ये जो सीक्रेटेड हाइड्रोजन आयंस होते हैं, दे मे आल्सो बी एलिमिनेटेड by combining with some filtered buffer, for example phosphate buffer. हर phosphate buffer जो है अपने साथ 2 हाइड्रोजन आयंस को बाइंड कर लेता है या बाउंड कर लेता है, और इस हालत में ये यूरिन में शामिल होता है और यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है. ये जो मेथड है, इट
excretes about 36 millimole of hydrogen ions each day.